हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन की यारी। आज हम डिस्क्रीट सीरीज डेटा से मीन डिविएशन फ्रॉम मीन फाइंड आउट करेंगे। इन डिस्क्रीट सीरीज मीन डिविएशन फ्रॉम मीन को डिटरमाइन करने का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ इंटू डी एक्स बार डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज एन। डी एक्स बार कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एक्स माइनस एक्स बार एंड एक्स बार दैट इज मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। In the given series, firstly we find out mean. Therefore, mean is equal to summation of fx, that is 184, divided by number of observation 20 is equal to 9.2. Now we calculate summation of dx bar ignoring minus sign. Next we calculate f into dx bar and we get the summation of f into dx bar is equal to 48. Now put this value mean deviation from mean formula. Therefore, summation of f into dx bar 48 divided by number of observation 20, and finally we get mean deviation from mean is equal to 2.4. I hope आपको डिस्क्रीट डेटा से मीन डिविएशन फ्रॉम मीन कैसे फाइंड आउट करते ये क्लियर है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानने के लिए अपने एजुकेशन की यारी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।